A very good evening to one and all present here. My name is Rishabh Gupta, and on the Undercover Lawyers channel, we are today going to start a new lecture series of Criminal Procedure Code 1973. So let me tell you the brief about it. That in the lecture series, we are going to divide the different chapters into different lecture series. Like each each lecture video would be consisting of one part, or it can be more than one part, but I would try my best that I would be explaining the concept in a well mannered way so that it could be understandable for you, and the people who are just beginning from the scratch itself, it would be very beneficial. The lecture would be very beneficial for the students. So be with us on the Undercover Lawyers itself, and we would be covering the whole topic. So let me tell you a glimpse about the thing, that how we would be approaching. Like first of all, like as I have given the in my introduction, after that, we are going to do like basic understanding about the substantive and the procedural laws, and CRPC, when was it being implemented, what is the concept of crime, and how offense is being taken place, and what are all the stages. And then we would be going to the maxim, that audi alteram partem, which clearly states that accused should be provided with the fair, reasonable, and non-arbitrary proceedings. So this is the thing, I think. And the next step, we are going to do the principles on which the CRPC is being based, and why was it being implemented, what was the sole and whole purpose of CRPC being implemented. And then we would be covering the criminal procedure code by the Barrett itself. Like if you many of the schools and institutions, I have heard about it, that they used to focus upon those dukis and all the books, but the thing is, we are here we are like we in this lecture series, we would be only focusing upon the prelim based, and we would be covering, like we would be making the concepts understandable to you, so that you would be able to do and achieve greater endeavors in the future. Okay, so yeah, so this is the Code of Criminal Procedure 1973. Yeah, this is the Code of Criminal Procedure 1973. uh, yes, here it comes. So let me tell you about now that what is substantive law. Substantive law is the law that states the rights and obligations of the parties concerned. Substantive laws. What are the substantive laws? Substantive laws are the laws which tells us about the rights, obligations, liabilities, duties of the parties, of the person, of any person who is residing into any country or temporary resident into any country. So the substantive law tells us about their rights and liabilities, as such the TPA and what do you say, that Indian Penal Code. These are the substantive laws. These laws tells us about the rights and liabilities of the parties. And the next comes is the procedural law. Procedural law is that law which tells us about the procedures to be followed during the implementation of those laws. During the implementation of those laws, how the laws are like rights are being provided to us into our constitution, also into substantive and different kinds of acts also. But the thing is that how are they gonna be implemented into the nation? So they are going to be like, if someone infringes those particular rights, how they are being implemented. So they can be implemented through the procedural laws. Procedural laws tells us about the procedures to be followed, or the machinery to be followed for the imposition of the rights and duties.
for the imposition of the rights and duties, the procedure lays down the procedure law lays down the procedure to be followed by the criminal courts. It it tells us about the procedure to be followed by the criminal and the civil courts. In the criminal procedure code, it would be criminal courts by country in order to administer the substantive law. Okay, ये जो प्रोसीजरल लॉज हैं हमारे को बताते हैं कि प्रोसीजर कैसे फॉलो होना चाहिए जब हम अपने राइट्स और लाइबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और राइट्स और लाइबिलिटीज़ कौन बताता है? हमारे सब्सटैंटिव लॉ, आसान भाषा में, ठीक है, ये है। और सीआरपीसी, अब जो सीआरपीसी है ये केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आया था? ये 1 अप्रैल 1973 को फोर्स में आया था। It was being implemented on 25th of January 1974. It was being passed by the parliament. It was being executed and implemented throughout the nation. मतलब कि 1 अप्रैल 1974 से ये पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। इसके बाद, इस डेट के बाद, इस दिन के बाद से जो भी ऑफेंस होंगे वो 1974 के एक्ट से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट से डील करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से ही डील करेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज दैट व्हाट इज क्राइम? Crime is considered to be wrong against the society, so therefore it is in the interest of the society that culprits should be found out and punished for its sin. कल्प्रिट्स को उनके बुरे कर्मों के लिए पनिश करा जाएगा, ठीक है। बुरे कर्म मीन्स बाय द ऑफेंसेस विच आर बीइंग मेंशन्ड इनटू द इंडियन पीनल कोड। यस, वेरी गुड। The offenses which are being mentioned into the Indian Penal Code, and that too in the Criminal Procedure Code also. So they are being penalized. The person who commits those crimes are being penalized through the Criminal Procedure Code, and those acts are being called the crime. So there is a concept of mens rea and actus rea. You must have gone through it in Indian Penal Code when you must be reading it. I would be covering the same. For the time being, let me make you understand it that actus reus is the actions which a particular person performs, and the mens rea is the guilty mind of the person who commits the crime. Okay. Now the maxim here comes the audi ultram partem. The maxim states that the proceedings against the accused should be fair, reasonable and non-arbitrary. So ये maxim क्या कह रही है कि जो proceedings होंगी किसी भी केस के अंदर, ठीक है, accused के खिलाफ वो fair होनी चाहिए, reasonable होनी चाहिए, non-arbitrary होनी चाहिए, और उसमें कुछ principles follow होने चाहिए जो हमारे interpretation of statutes और different laws में दे रखे हैं as principle of natural justice and different kinds of principles. Okay. Now comes is that principle of CRPC are principle of CRPC के principles क्या हैं जिससे वो let down हुई है, ठीक है, उसका purpose क्या है? For safeguarding the interest of the society, हमारी सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए CRPC को इम्प्लीमेंट करा गया है। फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए CRPC को इम्प्लीमेंट करा गया है। For speedy proceedings, speedy and fair trial. Speedy in as such, Indian laws, it is just like a joke. But the thing is we deliver the the proceedings in such a way that a person who has not committed any crime, he cannot be penalized before the courts. There you must as we would be going further into our lecture series, you would also be getting to a principle arrest is just an alternate remedy, but correctiveness or the rehabilitation of the accused is more important than the arrest. So this is the thing.
or then the arrest or penalizing them. Okay, so like here, fair trial, principles of CRPC, it consists of fair trial. The trial should be fair enough for the accused and for all the persons. Conviction of accused should be convicted. Okay, and the principles of natural justice, reasonableness and accountability should be followed. Principle of reasonableness states that if a judge is pronouncing a judgment, so he must state the grounds of the that uh, punishment that he is announcing. Okay, and natural justice is as such the fair and reasonable trial and all those things. Okay, so here comes the Code of Criminal Procedure 1973. These are the arrangement of the sections which are being there. Like you must have gone through it. You must carry your berets handy so that it could be better understandable for you. Okay, so the first chapter starts with the preliminary, which consists of 5 sections. Like as we all know that each and every act, second section, like section 2 or section 5, is the definition clause. So this is the thing. So it consists of many of the definitions from A to like W or something. Okay, so here comes the short title, extent and commencement. Short title, like what would it be, be the code be called, and the extent of operation, like from where to where it would be extended and from when it would be commenced. Here comes the definition, construction of references, and these all are the things. Okay, chapter 2, constitution of the criminal codes, powers of the codes, chapter 3, and we would be going through it. Okay, so let me jump on to that main section, so that like without wasting any time we would be covering our syllabus as soon as possible. Yeah, so here comes the Code of Criminal Procedure 1973. Okay, it is the act number 2 of the 1974. You must remember that it can come into the like MCQs in the preliminaries. Okay, so chapter 1, preliminary. Preliminary, it tells us about the what are the preliminaries. Like preliminary, you can broke down these words into different different parts, and you can think of that it is a preliminary, like pre all those things. We will be going through all these like 5 sections. Each and every act consists of these all, each and every code consists of these preliminary sections. Okay, so the first section tells us about the short title, extent and commencement. Short title means like what would be the title of the code which we are going to study about. So the title would be, the act may be called the Code of Criminal Procedure 1973. Code of Criminal Procedure 1973. Okay, and uh, like extent, then it is talking about the extent. It extends to the whole of India except the, it extends to whole of India, extends to whole of India by the, let me tell you about that. uh, yes, so what was I be talking about? Yeah, it extends to whole of India by the Amendment Act of 2019. It extends to whole of India. State of Jammu and Kashmir was also included into it, but from now onwards, like it is wrongly mentioned over here. It extends to whole of India. Now it extends to whole of India. This part is being deleted, and I have also deleted the same. Okay, yeah, provided that the provisions of this code other than those relating to the chapter 8, 10, 8, 10, 9 thereof shall not apply to the state of Nagaland. Shall not apply to the state of Nagaland. Yes, state of Nagaland and the tribal areas. So
The state government concerned may by notification include or exclude these all parts into the particular codes. Okay. Now the second section come is that in this code, unless the context otherwise requires, so it is a okay. 2a, it is the most important definition clause. So let me tell you about these all things by a brief explanation about it. Yes, so I have made notes regarding it, that but I was unable to share the same. I would be sharing the PDF of the notes in the same, like in the description, so you can go through all those things. Okay. Yes. So according to the prelims point of view, let me state all those acts, like all those uh, subsections which are important for the point of view of this. Okay. GHI. Okay. L is important. NOP, QR, and UV, W and WA, yeah, and Y, yeah. And here comes the subsections which are not important for our this point of view. JNK, JNK, okay, yeah, and N. And here comes the ST. Okay, so these are all sections which are which are which subsections which I have mentioned in the upper line. These are all important subsections, so you must go through all these subsections. Okay, and the sections which are being mentioned into this are not so relevant for the prelims point of view. Okay, so like ऊपर से पहले है, ठीक है. So let me explain you about the first schedule. SOP, SCBT. Just giving a glimpse about it. I would be explaining the same in the further lectures. Yeah, S means, yeah. Should I make lines over here? Nope, I don't think so. There is any need for making any line. It is clearly understandable. Yeah. S means sections. So it is mentioned in the into the schedule 1. Okay, table 1 and entry number 9, I think so. It is mentioned into it. Okay, that S means section, O means offenses, P means punishment, C means cognizable or non-cognizable, B means bailable or non-bailable, and T means triable by which court. Okay, so these are all things which are being mentioned into the schedule of our schedule. So we would be going through them in our further lectures. So this is the main thing that you do have to remember into, like, for the for so that you would be easily able to get further into the code of criminal procedure. Yes. Now comes the bailable offences. What are the bailable offences? Bailable offences means an offence which is shown as bailable in the first schedule. In the first schedule, I have told about it. That first schedule is this, not other than that. Nothing is like out of this. SOP, CBT, sections, offences, punishments,
cognizable or non-cognizable, bailable or non-bailable, and triable by which court. Okay, so or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offences means any other offence. So it is clearly stating that bailable offences are the offences which are being mentioned into the first schedule, and non-bailable offences are offences which are being mentioned into the which are other than the bailable offences. So let me tell you about that in the like simple language. Bailable offences वो offences होते हैं जो हीनियस क्राइम के नहीं होते, मतलब कि जो जिस ऑफेंस में 2 साल से कम की सज़ा है, ठीक है, वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, साफ सीधी बात, ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो आते हैं ज़्यादातर, जैसे हीनियस क्राइम, ग्रीवियस नेचर क्राइम्स हो गए, ठीक है। आई एम नॉट लाइक फुली करेक्ट अबाउट दैट देयर आर सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच 7 साल वालों को भी सज़ा मतलब बेल मिल जाती है, ठीक है। आजकल तो कभी कभार मर्डर एंड इवन पॉस्को वालों को भी मिल जाती है, बट द थिंग विच इज़ बीइंग रिटन इनटू द स्टैट्यूट्स, सो आई एम मेंशनिंग द सेम, ओके। Yes, the next thing is section 2b, charge includes any head of charge when the charge contains more than one. सो चार्ज क्या होता है, सिंपल भाषा में चार्ज ये होता है किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक्यूज के ऊपर नंबर ऑफ ऑफेंसेस लगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके घर में एंटर करा, ठीक है, मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, और साथ ही में मैंने चोरी करी, ठीक है। तो कौन कौन से ऑफेंसेस लग गए, एक तो थेफ्ट, ठीक है, डेकॉइटी तब लगेगा जब मेरे साथ मोर देन 5 इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, फॉर कमिटिंग द डेकॉइटी, यस। और मैंने आपको थप्पड़ भी मारा, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस विच आर बीइंग कंबाइंड, like house trespass. There are different number of sections which are being combined. I have made you confined in your home, into your home, in the like 4 walls. So there are different number of sections which are being, which I would be charged in the offenses. So this is the thing. So there would be number of charges which would be like made on me, है ना। सो वो ट्रायल का प्रोसेस है, ठीक है। चार्ज का मतलब सिंपली ये होता है कि नंबर ऑफ ऑफेंसेस, नंबर ऑफ सेक्शंस विच आर बीइंग विच अ पर्सन इज बीइंग लायबल ऑफ, ठीक है। जिस जिस सेक्शन में उसने क्राइम करा है वो सारे चार्जेस, कौन कौन से चार्ज उसके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है। नाउ कम्स द सेक्शन 2c, cognizable offenses. Cognizable offenses means an offense for which the cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। एक ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, उन ऑफेंसेस को कहा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यस। अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट साइन, विदाउट वारंट, किसी भी केस में, जिस केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, उसी को कहते हैं कॉग्निजेबल केस या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। देखो, जो ऑफेंसेस होते हैं ना, ठीक है, जो लॉ होता है वो सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल होता है, ठीक है। अब जो केस जो होते हैं ना, वो वारंट केस और समन केस में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वारंट केस में अरेस्ट मतलब वारंट केस वो होते हैं जिनमें हमारा 2 साल से ज़्यादा का, ठीक है, टाइम पीरियड के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो वारंट केस में आते हैं, ठीक है। 2 साल से कम जितने भी केसेस होते हैं वो समन केसेस में आते हैं, ठीक है। अब कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जो कि जिनमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है, ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं किसी को भी, ठीक है। नाउ कम्स द सेक्शन 2d ऑफ
विच एक्सप्लेन्स अबाउट द कंप्लेंट. व्हाट इज़ द कंप्लेंट? कंप्लेंट कुछ नहीं होता, एक एलिगेशन होता है जो पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर लगाता है. ठीक है, कंप्लेंट हमेशा किसके सामने करी जाती है? मजिस्ट्रेट के सामने. और पुलिस ऑफिसर्स को हमेशा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसीलिए वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं. और कंप्लेंट कौन रजिस्टर करता है? मजिस्ट्रेट. ठीक है. अ कंप्लेंट, section 2D tells us about a complaint. Complaints means any allegation made orally or in writing. कोई भी ऐसा एलिगेशन जो ओरली या फिर राइटिंग में मजिस्ट्रेट को दिया जाए, उसी को कहते हैं कंप्लेंट. ठीक है. with a view to taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense. जानने वाले बंदे ने या फिर जिसे हम जानते नहीं है उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है. ठीक है, हम उस चीज़ की राइटिंग या फिर ओरली में मजिस्ट्रेट को हम अपने पेश कर देंगे. ठीक है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस चीज़ पे एक्शन ले. ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करता? इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट. ओके, नाउ कम्स हाई कोर्ट. हाई कोर्ट्स क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स मीन्स एनी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट होती है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो हमारे देश के लिए. ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट इन टू द नेशन, and each and every state is being allocated with a different high court. There are some of the states in which 2 or more states have a common high court, but the thing is like each and every state is having their particular high courts. In relation to the union territories, these are all things like you can go through all these things. Okay, I will be explaining the relevant part only. India, this is not relevant enough. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted by under this code by a magistrate or court. इंक्वायरी क्या होती है? एक कोई भी ट्रायल होता है. ठीक है, किसी भी ट्रायल में जिसमें मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट खुद आकर इन्वेस्टिगेशन करें, खुद इन्वॉल्वमेंट लेके इन्वेस्टिगेशन करें, उस इन्वेस्टिगेशन में खुद इन्वॉल्व हों. ठीक है, उसी को इंक्वायरी कहते हैं. ठीक है, वरना इन्वेस्टिगेशन ही कहा जाता है उसे. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन की भी डेफिनेशन आ गई हमारे पास. सेक्शन 2H, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर. इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन कोई भी प्रोसीडिंग होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है. ठीक है, बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट. एक अदर देन अ मजिस्ट्रेट. ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और एविडेंस कलेक्ट करे जाते हैं, उसी को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. ठीक है, इसमें मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन कमिट करे. ठीक है, नाउ कम्स द सेक्शन 2I, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? ये इंक्लूड करती हैं कोई भी एविडेंस और कोई भी स्टेज जिसमें एविडेंस जो है वो लीगली टेकन बाय ओथ होना चाहिए. मतलब कि जैसे हम आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे इफ़ यू आर नॉट हैवंट गॉन टू द कोर्ट, लेट मी टेल इट टू यू, you must have seen into the movies and all that they used to take oath on the Gita and Quran, all those holy books. So this is the thing, they used to take oath that they would be stating all the facts in a true manner and they won't be saying any lie or things like that. Okay, so this is the thing. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें एविडेंस दिया जाता है ओथ पे. ठीक है, सिंपल भाषा में. लोकल जुरिसडिक्शन क्या होती है? लोकल जुरिसडिक्शन में कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन जो मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिसडिक्शन होती है, इसमें ये डिलीट हो जाता है. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8. मेट्रोपॉलिटन एरिया मैं बता देता हूँ. मेट्रोपॉलिटन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जिस एरिया की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो. ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा हो और उसे स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया हो मेट्रोपॉलिटन एरिया.
ठीक है, तो उसी को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, अब आगे नॉन कॉग्निजेबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट करने की। ठीक है, notification, these are all irrelevant sections. Yeah, offense means like yeah, in section 40 of the Indian Penal Code there is being defined like offenses being defined, so you can go through there. ठीक है, ऑफेंसेस क्या होते हैं, कोई भी क्राइम कमिट करा हुआ किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो जो पीनलाइजेशन के अंदर जो किसी भी कोड के अंदर पनिशेबल हो उसी को ऑफेंस कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, officer in charge of the police station, he is the officer in charge, like SHO is being the officer in charge of the police station, or uh, like in the absence of the SHO or in the absence of the officer in charge, the subordinate of that officer in charge, like SHO है तो SHO का सबॉर्डिनेट SI होगा, ASI होगा। ठीक है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन माने जाएंगे जिस टाइम पे SHO एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसमें एक प्रोविजो है कि दैट कांस्टेबल रैंक से ऊपर का बंदा होना चाहिए। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू, ये है इट इज, हु इज़ द नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच पुलिस ऑफिसर, सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का बंदा होना चाहिए। ठीक है, यस, नाउ कम्स द सेक्शन 2Q, प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। प्लेस कोई भी हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, relevant things। ओके, द प्लीडर्स, अब देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, प्लीडर कौन होता है, प्लीडर when used with reference to any proceedings in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such areas includes any other person appointed with permission of the court to act in the proceedings। सिंपल भाषा में, द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द पर्सन, जो पर्सन रिप्रेजेंट करता है एक दूसरे पर्सन को। ठीक है, पर्सन हु विल बी प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ की प्रैक्टिस करता हो रेगुलर, एज सच द एडवोकेट्स। ठीक है, अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट मीन्स लाइक सेक्शन 2R, पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट। एक पुलिस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो फॉरवर्ड करी जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पुलिस डायरी। ठीक है, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो मतलब जनरल डायरी के बेसिस पर प्रिपेयर करी जाती है। जनरल डायरी क्या होती है, विच रिप्रेजेंट्स द कोर्ट, इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉज। ये पुलिस ऑफिसर्स जनरल डायरी को मेंटेन करते हैं कि केस की प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, किस टाइम पे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, नाउ कम्स द पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट, लाइक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लाइक पुलिस वालों की सिटिंग है। ठीक है, जहाँ पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करती है, पुलिस के लिए ऑथराइज एक चैम्बर और लाइक हाउस टाइप में बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन माना जाएगा। वहाँ पे बंदा अप्रोच कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है और वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, prescribe, these are all irrelevant sections, so I won't be going through all these things। I have explained about the summon cases before and warrant cases। There are two type of cases, summon case and warrant case। summon cases वो cases होते हैं जिनमें 2 साल से कम की सज़ा होती है, वारंट केसेस वो होते हैं जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट टर्म एंड सिंपलेस्ट मैनर, warrant cases I have explained। Yeah, now comes the constructions of references, but before going through all those things, let me explain you one thing, and that is most like relevant into these all things। Okay, I was willing to make the charts like
Yeah, so these are all the offense. ठीक है, offense is being, first of all let me tell you the like what is being the like chart or stages of the criminal procedure code, which like stages of the proceedings in the court. सबसे पहले ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है। ऑफेंस कमिट होने के बाद उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। पर्सन कौन होते हैं? पहला बंदा जो होता है वो होता है कंप्लेनेंट, ठीक है। कंप्लेनेंट, विक्टिम, ठीक है, कोई भी बंदा हो सकता है, कंप्लेनेंट या विक्टिम। कंप्लेनेंट, विक्टिम, जिस बंदे के साथ ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है। एक्यूज, दूसरा बंदा कौन इन्वॉल्व होता है? एक्यूज। एक्यूज इज द पर्सन हु कमिट्स द क्राइम, या फिर जिसके ऊपर कंप्लेनेंट एलिगेशन लगा रहा है कि वो उसने क्राइम करा है, ठीक है, या फिर प्रोसीडिंग्स में सामने आया है कि उसने क्राइम करा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसके ये राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है, ये क्राइम उसके साथ कमिट हुआ है, तो उसको संज्ञान में लिया जाए। पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। किससे करेगा? पुलिस ऑफिसर से या फिर मजिस्ट्रेट से। फर्स्ट कम्स इज दैट पुलिस ऑफिसर, अगर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन FIR. FIR is the first information report which are being registered into the police station, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो FIR रजिस्टर करता है, या फिर अगर कंप्लेनेंट जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करता है मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर लिखी जाती है उसकी कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन की स्पेलिंग, या ओके, तो वहाँ पर उसकी रजिस्टर करी जाती है कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन, अब कंप्लेन रजिस्टर करी है उसने, ठीक है, तो वो कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद अब ये तो समझ में आ गया ना कि इफ़ इट इज़ बिंग रजिस्टर्ड, लाइक अगर किसी कंप्लेनर ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है पुलिस ऑफिसर को या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, तो वो मानी जाएगी FIR, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर कंप्लेनर ने डायरेक्टली अप्रोच करा है मजिस्ट्रेट को, तो वो मानी जाएगी कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेंट। या तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कंप्लेनेंट, ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। हियर कम्स द इन्वेस्टिगेशन, द स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ओके। इन्वेस्टिगेशन के बाद मे अरेस्ट। CRPC में जब भी आप देखेंगे तो मे अरेस्ट, शैल नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ एन एक्सेप्शन, अरेस्ट इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। अरेस्ट हमेशा एक्सेप्शन होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये वायलेशन होता है हमारे, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, विच प्रोवाइड्स लाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, आर्टिकल 21। सो इसका वायलेशन होता है, ठीक है। ये किसने ग्राउंड्स लेट डाउन करे थे? ठीक, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने, ठीक है, कृष्णा अय्यर ने। तो प्लीज़ नोट डाउन दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने ये हमारे ग्राउंड्स एक्सप्लेन करे थे राइटली, दैट अरेस्ट इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन, the rehabilitation of the accused should be the prior motive of a legal system, ठीक है। जेल इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है, बेल इज़ अ रूल। सो इन्होंने ये रूलिंग दी थी कि बेल इज़ एन, जेल इज़ एन एक्सेप्शन एंड बेल इज़ अ रूल, ओके। या सो नेक्स्ट कम्स इज दैट जो मैटर है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएगा उसके बाद, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में ये मैटर चला जाएगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में बंदे के ऊपर बनेंगे चार्जेस, ठीक है। चार्जेस जो हैं उसके ऊपर कमिट करे जाएंगे, ठीक है। चार्जेस कमिट करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होगा। वैसे तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, ठीक है, CPC में होता है,
बट फिर भी चार्जेस बनेंगे उसके ऊपर, ठीक है। या चार्जेस के बाद ट्रायल चलता है, ठीक है। नाउ ट्रायल कितने तरीके का होता है? फर्स्ट ट्रायल, सेशन ट्रायल, we would be discussing about it in the further classes. Second is the warrant trial. And third is the summary trial. या और फिर अनाउंस हो जाती है हमारी जजमेंट, ठीक है। जजमेंट के बाद हमारा क्या आ जाता है? हमारी जजमेंट आ गई। अगर अपील रिवीजन नहीं हुआ, रेफरेंस I'm not failed today. ये अपील रेफरेंस या रिवीजन नहीं होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन होती है जजमेंट की। अदरवाइज हमारा अपील में बंदा जाता है, ठीक है, रेफरेंस में जाता है, ठीक है, रिवीजन में जाता है, ठीक है, रिव्यू में नहीं जाता, रिव्यू CRPC में होती है, ठीक है, CPC में होती है। या उसके बाद क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है, हमारी रेफरेंस होता है, ठीक है। यस, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट क्वालिफाइंग द मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज इन रिलेशन टू द area outside a metropolitan area as referred to judicial magistrate is relevant. Each and every, like, these are all things which are irrelevant. Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws. All offences under the Indian Penal Code 1860 Act number 45 of 1860 shall be investigated, inquired into and otherwise dealt according to the provision hereinafter contained. So here therefore, like, हमारी थ्योरी ऑफ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाती है कि इंडियन पीनल कोड जो है उसके जो भी ऑफेंसेस होंगे, जो भी डेल्ट होंगे, ठीक है, सो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा डेल्ट करे जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ investigated and inquired into, tried and dealt with according to the same provision, subject to the enactment for the time being enforced, ठीक है। मतलब CRPC से डेल्ट होंगे सारे लॉज, ठीक है। अगर स्पेशल लॉज में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इस प्रोसीजर से फॉलो करा जाएगा तो वो स्पेशल लॉज और लोकल लॉज एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज अगर कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा तो वो CRPC से ही डेल्ट होंगे, ठीक। इसमें नॉर्मली ये दे रखा है। यस, नाउ कम्स द सेविंग नथिंग contained in this code shall, in the absence of specific provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, ठीक है। ये वही समझाया हुआ है कि स्पेशल और लोकल लॉज में, ठीक है, अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है तो वो उन्हीं स्पेशल लॉज के अकॉर्डिंग ही डील होगा, जैसे पॉस्को में दे रखा है, ठीक है, और कोका वगैरह, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो धन्यवाद। प्लीज़ डू फॉलो आवर चैनल एंड बी विद अस on the undercover lawyers.